Okay. Okay, good morning students. Today we'll continue our previous unit, projection of planes. So continuing last topic, as you all know, under projection of planes, so you have to first of all understand that what type of plane that particular shape or figure is. Then you have to think that how that plane is resting, or how that plane is making an angle with HP or VP. First figure is suppose square. So in making of a square, I don't think anybody will be having any problem. See, you have started first of all with triangle. So you know so many different types of triangles: right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. Clear? Then circle. You all know the basic geometry of circle, that having one particular center, dia, that they can have dia. So you can understand this periphery as circle, this is triangle comprising of three sides, circle comprising of this, because of this diameter. Suppose this is a triangle ABC, this is a circle having diameter AB. Clear? Then after triangle, after circle, you will be getting square. Square A, B, C, D. So this is square, complete all 90-degree angles. So you have to, then after square you have rectangle A, B, C, D. Clear? Rectangle comprising of two parallel sides, opposite two parallel sides, and two dimensions. This is length, this is breadth. After rectangle, now see, three sides, one particular, because of dia, one particular circumference circle, four equal sides square, two opposites rectangle. After rectangle, now the journey of polygons start. So after four, what you will be getting? Five sides. So five sides will be, whenever you make any geometrical figure exceeding these four sides, because now the journey of triangle, circle, square, rectangle is over. So after that, the maximum number of sides, now suppose there is number of sides 5. So what you will get? Pentagon. Pentagon is called as polygon also. Now in this pentagon, you can see this one side. First of all, you have to make this one particular side as AB. Then if this is a regular pentagon or some other pentagon, one thing is common, that is all sides, they will be having 5 equal sides. Clear? A, B, C, D, E. So this is a pentagon resting at edge AB. Clear? So right now this AB is exact horizontal, but this AB can be vertical also. If this AB side is vertical, suppose this is AB. So how your pentagon will be appear? This can be you have this one very simple pentagon. Now if I change with some angles, you will have this pentagon. You can have some other distorted angles also, but see, this AB is not disturbing. You can have this particular pattern also, A, B, C, D, E. So this is what? Pentagon.
Now how you are going to construct a pentagon? You know the basic fundamentals of pentagon. Now how you are going to construct a pentagon? So to construct a pentagon, you have to, first of all, I am taking an example of pentagon, making this edge AB. So this is AB. First thing you have to do is what? Make BC equal to AB. This is one method. You can have plenty number of different methods also. Right now I have taken AB, and this AB is equal to BC and resting at an angle of 90 degree, means I am taking exact equilateral triangle. So if you join this particular hypotenuse, this is called AC. Now what you have to do, from point A, from point B, you have to make perpendicular bisector from this edge AB. So your perpendicular bisector will be little bit more than this. So you will suppose you are making, you are keeping your compass needle here, pencil this side, same way from here, this side, then you will be getting this particular line. So this is suppose D, point where it cutted the hypotenuse marked as C. Now keep this line as vertical, no problem. Now you are getting this point, just mark this point as 4. Why I am saying this to mark this point as 4? Because you have studied till 4-sided, that is what, rectangle or square. But now beyond 4, if you add 5, you will get pentagon. If you add 6, you will get hexagon. If you add 7, you get heptagon, same way. So this point will make you to erect or to construct one square. But if now now you have to now you have to construct another point from 4. So you are taking any options, but through this option you will understand the basic construction of different polygons. You can make, with the help of this triangle only, you can make pentagon, hexagon, heptagon, anything. But in our questions, as in my previous lecture, you can save your time by directly marking with angles. Suppose for pentagon you will be having 108 degree. So at that time you are not getting this much time to construct in this whole process. Clear? So but you should know this basic method. So for this, now after taking this AB as a side, you have to point your compass needle here, then mark this BC as here. Wherever it cut, just mark that point as 6. Clear? First of all, AB side you drawn the perpendicular bisector. Clear? You have drawn the perpendicular bisector. At that time you are getting this point C and marked C as 4. Just to memorize you that because of this point C or marked as 4, you will get square. But you don't need square right now. You need pentagons. So for this you can mark only this arm and just make this particular curve, and wherever it will cut, this will mark as C. Now again what you have to do, you got this point 4, you got this point 6. What you did in this AB length, perpendicular bisector of this AB, same way now you will draw the perpendicular bisector of this small patch 4 and 6. Suppose if I named this 4 point as C and 6 as D. So what you will do, you will draw again the perpendicular bisector of this. So you will get this line. So actually this is just the midpoint of this line, perpendicular bisector. So you will mark this as 5. Clear? Now same way you can go to any limit. Now this is 4, this will make you square, 5 will give you pentagon, 6 will give you hexagon. Same way you will choose these bullets in your compass and you will start marking. You can measure this, again you will cut, you will get 7. Same distance you will cut, you will get 8.
Same distance you will get 9. Same distance you will cut, you can get 10. Means you can make dodecagon also through this vertical process. This vertical line is very important. Now, for pentagon, you will place your compass needle here and you will draw a circle marking this length 5A, cutting through AB. So you will get this particular circle, clear, comprising of AB. Now from this point 5, you get this circle. Now what you have to do? You have to take this AB's edge and start marking with your compass. AB आपने यहाँ लिया, needle इधर, pencil इधर, एक बार इधर. Up now, needle here, compass here. Clear? Same way, one side, two side, three side. Automatically you will get 5 side. Suppose this is, so you will get 1 point here, then you will join this. You will get 1 point here, you will join here. Another point, suppose here, you will join here. Automatically last point will overlap with this point B. Automatically you will get, now you can dark this pentagon. Same way, if you take 6 as a point and draw circle going through AB, so this will be little radially outward. So automatically then you have to again, what you have to do, just choose this these 5, 6, 7, 8 points to make what polygon you want to make. Then same process, AB is the length, all edges will be equal, so you just start cutting, you will get this pentagons. So this is the basic geometry. Automatically you will get all polygons up to dodecagons or 10, 11, 12, anything. But just to save time here, you can draft directly pentagon 108 degree. You can memorize all degrees, angles, that you know that triangle, rectangle is what 90 degree, square is what 90 degree, pentagon is what 108 degree, same way. Now coming to our projection of planes question, what was the process? You have to first of all draw this AB line, XY plane. Now suppose if you are having square, right? Suppose if I am taking this square, so you can see this plane. This is a piece of paper, square. Now this is ABCD. So under HP, if I say that under HP horizontal plane, if this is resting like this, so you can see this square will be resting simply like this, ABCD. But from front if you see, you will see what? Only this line. Suppose I have marked ABCD like this. So ABCD like this. But if you see from front, what you will see? This AB. So if you draw the projection on XY plane, you will find this dark line, only AB, because we are seeing from here. So 1 point, this is what A, this is what B. But what is behind A? That is D. So you can mark this projection of this square as AD, and projection of this square from this point as BC. BC means B is in front, C is in back side, A is in front, D is in back. So this line comprising ADBC is just a simple projection of square. But now condition change. So what condition is changing? That this square is now not resting, very simple. Now it is resting at one particular vertex. Vertex you all know, this is square, vertex will be what? This corner, this corner, this corner or this corner. This square is having 4 vertex. Or how many sides? 4 sides, 1 side, 2 side, 3 side, 4 side. Now the condition is changing, sorry. Now the condition
this square is now not simply resting. Now this square is resting at one corner. Suppose that corner is A. So nomenclature will also change. Suppose if I draw this one particular simple to make you understand that from where you want. So now your that square will actually appear like a rhombus, because now this square is not simply, this square is resting at vertex. So earlier this was simple square, now this is at corner or at a vertex. So this will appear from top, this will appear like at a diagonal, means square at a diagonal, or you can call it as a rhombus also. So what change you will find that this is A, this is B, this is C, this is D. Now you will start projecting. So if you will start project, ये XY line है, this will be only A. Now this is not AB, because no any B or no any C is neither in front nor in back. But if you project from here, you will find this point, projection from this point, you will find this point. So actually you get what? This point as a C, and this is the complete line. But because you are seeing from here, because this is the front elevation, this is the plan, so you will see this point as B. But what is behind B? That is D. So this line is simply resting at XY plane, but now this line has different meaning, because now this is having this BD thing, because this square is now at a vertex. This language could be different. Square is at vertex, or you are having this diagonal AC of this square perpendicular or parallel to those planes. So means language could be anything. You have to understand that how the numerical problem, how the particular problem is saying what. We can say on behalf of this diagonal also AC, we can say on this behalf of this diagonal BD also, we can say on this behalf of vertex also, we can say on the behalf of opposite vertex. Suppose now this is the vertex, now C is the opposite side vertex. So slowly we will taking. Now this is the simplest. Now this rhombus is making an angle with HP. So suppose this is making an angle of 45 degree with HP. So what you will do, you will draw this particular AC line at an angle of 45 degrees. Simple. You have drawn this at an angle of 40 degrees, but try to understand the fundamental. When you are going to draft, if this AC is 100, if you are making at an angle of 45 degree, this will be exact 100 at an angle of 45 degree. Exact true shape. This is exact true shape, means original shape. This is also original shape. This is also original at 45 degree. Now you will mark this point also as it is. You have to, as it is, copy this particular line here as BD. Nomenclature can also be same, A, C, BD. Now you will drop your projections from these points vertically. So what you will get? All three projections lie down. Now here is A, B, C, and this is D. So from D, if you draw the projection, and here is also D. So just start joining. D run from here, D drop from here, you get this point as D. Same way A, here is A. So this will start dropping, and this will meet here. So this is point A. Clear? 2 points you get. Now B is going here. B यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है. Nomenclature is here. So this will drop here. This will go from here. You will get this point as B.
Now last is C. C is here. C is here. So it will drop here and it will start running from here. It will cut here. So automatically what you will see, right now I am just drafting, but when you are just exact constructing, you will find that this will be little squeezed. Just to make you visible, this is quite enlarged, but actually this is distorted because whenever you see anything from top, जो 100 था वो 100 की जगह 75 रह जाएगा. So right, this was of 100%, but अब ये लेंथ ऐसे होगी तो इसको ड्रॉप होगा तो ये reduced हो जाएगा. So earlier if this was this, so this will be quite squeezed. So you get this A, B, C, D as a projection at an angle of 45 degree. Now another thing is, now if suppose this is making an angle of 30 degree with the VP. So further, these are your two basic figures to understand. After that, third figure is to project at an angle of 30 degree. So what you will do, you will make this angle as 30 degree with the VP. So you will language can be like this, like diagonal or anything, but right now I am taking just AB as one dimension. Suppose this was AB, but now I am taking this 30 degree. So you are if you are taking this 30 degree as AB, so you are now start making. So you will get your points like this. A, B, C, D. A, B, C, D. Then you are taking at vertex. So इस लाइन में भी क्या होगा, ये जो A पॉइंट है ये वर्टेक्स पे ही रहेगा. बस यहाँ समझने वाली बात है. ये पॉइंट इधर A था, ये पॉइंट इधर A था, अभी सिर्फ 45 डिग्री तक चल रहा था, बट 30 डिग्री VP है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर A पे लेते ही आपका ये एज इट इज ये पूरा फिगर यहाँ बन जाएगा. ये A है, B, C, D, तो ये वर्टेक्स है. डिस्टॉर्टेड रहेगा थोड़ा सा, अभी मैंने बना दिया. नाउ यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्शन. तो एक ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, एक ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, एक ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, एक ये प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा. सो हियर दिस इज द पॉइंट A. यहाँ पर A पॉइंट कौन सा इधर. नाउ यू टू स्टार्ट दिस अगेन मैच. A विल रन फ्रॉम हियर, दिस विल, तो दिस इज मार्क्ड एज A. B is here, B यहाँ पर क्या इधर है. So you will project this also. B is here, B is here. So this will meet here. So this is your point B, AB. This is your C. C is going here, meeting here. So C is this. D, D middle है, D will meet here. So you will be getting this type of rectangle. This type of rectangle actually. ठीक है. So just see, you have to match these points from these points. So automatically you can hatch this also, or you may not hatch. Understanding is at vertex everything will be at vertex, everything will be at vertex. क्लियर. नाउ लैंग्वेज कुड बी एनीथिंग. अभी तो आपको बोल दिया 45 डिग्री है, बट हो सकता है मैं इस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या कर दूं कि 45 डिग्री नहीं है, ये A पॉइंट तो इधर ही है 0 पे, बट C पॉइंट 30 mm ऊपर है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बट ये पॉइंट आप 45 डिग्री से उठाने की जगह यहाँ पर 30 mm लिखकर और इस पॉइंट को उठा के ये बना देंगे. सिंपली लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, बट बेसिक ड्राइंग्स आपकी चेंज नहीं होगी. Clear?
So this is the case of simplest vertex H. Okay, मैं बोल देता हूँ. Okay. Okay, so now the case of rectangle. Now Ram sir will teach you case of rectangle. Good morning. I think we can do it practically. If you see this, this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay? Now, if the plane is resting in HP, it is like this. Okay? So, this is the corner or vertex which is on the HP. Now, the surface is making 30 degrees with the HP. Correct? Right now, the diagonal BD is perpendicular to VP. And this corner is in HP. ये हमेशा HP पे ही है. And then, final figure is, this BD is making angle 30 degrees with VP. So, this will be the final position of the plane, of the square lamina. Now, if you see stepwise, so this is the first step here, and the elevation is a straight line. Then second step is here, it is making 30 degrees. Then in this time, the diagonal is like this. So your square is shifted or change the shape in a rhombus. क्यों? क्योंकि ये आपका जो diagonal है वो तो वही रहा, ये छोटा हो गया. AC reduced. Actually AC ने क्या किया? एंगल बनाया. जब एंगल बनाया तो ऊपर से देखने पर उसका जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया. So this rhombus is making angle now 30 degrees. Rhombus is making angle 30 degrees. वो यहां पर आ गया. और फिर फाइनली जब आपने इसको यहां पर देखा तो आपको ये रेक्टेंगल ये नजर आने लग गया. So this is how you can get the concept of square lamina. So thank you very much. So let me जी. Now as per the sheet, because Robin sir has explained the topic very nicely with the technology and with the PPTs and also with the physical models. But now what that we have to do in the drawing sheet, we have to discuss that. That is why I am coming here, because question bank का जो questions हैं, अगर आप देखें one by one, तो almost सभी रॉबिन सर ने already cover कर लिए हैं. If I go with question number 36, a pentagonal plane already done. Pentagonal plane is this. Let's make it pentagonal plane. So pentagon is this shape. 25 mm side is resting on one of its side on the HP. So if it is the pentagon resting on one of its side, already explained, this will be on the left side. So it will be kept like this. ये side जो है हमारा HP पे है. Then this is making angle. This is making angle. Correct? And then the side is making angle with VP. So अगर मैं ये HP लेके चलता हूँ, that this is the HP and plane is kept in the HP, so the plane is this. The true shape जो आया इसका वो यहाँ आया in the plan, और ये जो side है वो यहाँ पर आ जाएगा. Okay, and then it is making angle and then making angle. Already done with the PPT.
sir has already explained. Just to give the concept, I am using the model. I requested him that I am going to explain it. That's all. Thank you very much, sir. Then next is a hexagonal lamina of 30 mm side is resting on one of its corners. One of its corners. This question is also done with the PPT. Now this is the hexagon. This is the hexagon. There are 6 corners. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The nomenclature is corner to corner is the side, edge, and these are the corners of the hexagonal plane, hexagonal lamina. अब इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि जो हेक्सागोनल लेमिना है वो अपने एक कॉर्नर के ऊपर रखा है, तो हमको ये कॉर्नर पकड़ना है यहां पर और इसको लेफ्ट साइड में ले आना है. नाउ इट इज केप्ट इन द एचपी. अगर ये एचपी पे ऐसे रखा हुआ है, सपोज दिस इज एचपी, ये यहां ऐसे रखा है, तो हमारा जो हेक्सागन है उसका कॉर्नर यहां आ जाएगा. जबकि पेंटागन में जो था वो रेस्टिंग ऑन इट्स साइड, तो हमने इस यहां पर इसका साइड लिया था. वी टुक द साइड. लेकिन हेक्सागन में कहता है कि कॉर्नर है, तो कॉर्नर हम यहां लेंगे. सो इनिशियल फिगर जो हमारा हेक्सागन का बन जाएगा वो यहां से लेके बन जाएगा. देन द सरफेस इज मेकिंग एंगल विद एचपी. सरफेस इज मेकिंग एंगल विद एचपी. सो दिस इज मेकिंग एंगल विद एचपी. दिस इज विद द एचपी. एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शंस. और वन ऑफ द साइड इज मेकिंग एंगल विद वीपी, देन इट विल रोटेट लाइक दिस. तो 2 कंडीशंस हो सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज मेकिंग एंगल विद एचपी. सेकंड कंडीशन मेकिंग एंगल विद वीपी. फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट इज द प्लेन. अपने आप से 3 क्वेश्चन करने हैं हमको कि क्या प्लेन है, कहां रखा हुआ है और कैसे रखा हुआ है. क्या प्लेन है, जैसे ही हम सोचेंगे तो जो शेप है हमारे दिमाग में वो आ जाएगी कि इट इज अ ट्रायंगल, इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ पेंटागन, इट इज अ हेक्सागन, सर्कल. सो जो ट्रू शेप हमको जो बनानी होगी वो एकदम से फ्लैश हो जाएगी दिमाग में कि हमको ये बनानी है. सेकंड क्वेश्चन इज कहां रखा हुआ है. ये रखा कहां है, ये एचपी में रखा है या वीपी में रखा है. अगर एचपी में रखा है तो ट्रू शेप जो होएगी हमारी वो प्लान में आएगी. एचपी में अगर रखा है तो इसका जो ट्रू शेप बनेगा, ट्रू शेप मींस हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ट्रू शेप. कहां बनेगी, पहली फिगर कहां बनेगी, वो बनेगी प्लान में. देन थर्ड क्वेश्चन इज कैसे रखा हुआ है, हाउ इट इज केप्ट, हाउ इट इज प्लेस्ड. अगर ये रखा हुआ है कॉर्नर पे, देन वी विल रोटेट द हेक्सागन लाइक दिस और इस कॉर्नर को यहां ले आएंगे. इसी चीज को अगर हम स्क्वायर का ले लें, स्क्वायर लेमिना इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ए, तो हमने ए को यहां रख दिया. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या शेप है, स्क्वायर. कहां रखा हुआ है, एचपी पे, तो ट्रू शेप कहां गई, प्लान में. सेकंड क्वेश्चन हेक्सागन, कहां रखा हुआ है, एचपी में, ट्रू शेप कहां गई, प्लान में. थर्ड क्वेश्चन पेंटागन, क्या शेप है, पेंटागन, कैसे रखा हुआ है, अपने एक साइड पर, कहां रखा है, एचपी पे, तो इसका जो शेप है वो कहां आ गई, एचपी पर. ऑलराइट. सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ. क्या प्लेन है, कहां रखा हुआ है और कैसे रखा हुआ है. डिफरेंशिएट हो जाएगा और आपका जो इनिशियल स्टार्ट विद द क्वेश्चन का वो गलत नहीं होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन बैंक लेना है और अपने शीट के ऊपर करना है. दिस विल बी योर शीट नंबर 6. शीट नंबर 6. शीट नंबर 1 is printing, sheet number 2 is scale, sheet number 3 is your curves, sheet number 4 is projection of points, sheet number 5 is projection of lines. Now this is sheet number 6. Okay. A3 साइज की शीट, सेम प्रोसेस, सब कुछ वैसे ही लेआउट करके अपना नेम, रोल नंबर, ब्रांच एंड मेल आईडी सब लिखकर आपने अब ये दोबारा से काम शुरू कर दें, क्योंकि CT 1 तक का आपका सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है, वो आपका जो है चेक हो जाएगा. अब ये जो है आफ्टर CT 1, पोस्ट CT 1 जो काम है, इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो राइट नाउ यू विल start doing the sheet number 6, projection of planes. Okay, then question number 38. A circular plane of 30 mm dia is resting in HP on a point of its rim and plane makes an angle 60 degrees to HP and perpendicular to VP. Draw the projections. एक circular dia है, एक circular
डायामीटर 60 का लेमिना है जो कि एचपी पे रखा हुआ है, सिंपली रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन अ पॉइंट ऑफ इट्स रिम। इसकी पेरिफेरी पे, इसकी परिधि पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो एचपी पे रखा हुआ है, इट इज केप्ट इन द एचपी, मतलब ये ऐसे सिंपली रख दिया गया है। नाउ इट इज मेकिंग एंगल विद एचपी and the plane is perpendicular to VP. Right now this is perpendicular to VP. अगर मैं इसको ऐसे रखूं तब भी ये perpendicular VP के है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी perpendicular VP के है। तो कंडीशन क्या है? Circular lamina is resting on a point of its rim in HP and surface is inclined to VP. So ये आपका कंडीशन आ जाएगा। Already done, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है। Kindly go to the last lecture and very well explained with the PPTs. Then question number 39, square plane ABCD of 30 mm side is resting, अभी आज ही किया है हमने, diagonal AB AC and diagonal BD, ये अभी इससे पहले क्वेश्चन हुआ है, already done. Then question number 40, a hexagonal plane of 25 mm side is resting in HP on a side which makes an angle 45 to VP and the plane makes an angle 30 degrees to HP. अब यहां पर हेक्सागोनल प्लेन के दो सवाल आपके पहले किए थे, उसमें आपने ऑलरेडी किया है, बट वी विल एक्सप्लेन इट। बिफोर दैट वी विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ 25 mm by 55 mm is resting in HP on its shorter side and side makes an angle 45 to VP. The plane makes an angle 30 to HP. Draw the projection. Repeat the question. A rectangular plane of 25 mm by 55 mm is resting in HP on its shorter side. अपने छोटी भुजा पे रखा हुआ है और वो जो भुजा है वो VP से 45 डिग्री बनाती है और पूरा प्लेन 30 डिग्री बनाता है। Now the rectangular plane, this is the rectangular plane, this is the rectangular plane, it is resting in HP, it is resting in HP on its shorter side. तो क्या आपका प्लेन है? रेक्टेंगल। कितने बाई कितने का? 25 बाई 55 का, 25 बाई 55 का। कैसे रखा है? अपनी छोटी भुजा एचपी पे। तो एचपी पे जब हम रखेंगे तो ये रखेंगे। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैंने इसको यहां क्यों नहीं रखा, अगर मैं इसको यहां ये रख दूंगा तो यहां पर एंगल ऐसा बन जाएगा, बिकॉज शॉर्टर साइड एचपी पे रहना चाहिए, शॉर्टर साइड हमेशा एचपी पे रहना चाहिए, तो ये रखेंगे। नाउ यू कैन नॉट सी द एंगल, यू कैन नॉट सी द एंगल, आपको एंगल नहीं दिखाई देगा यहां पर। तो हमको क्या करना होगा? इसको ऐसे रखना होगा और इसको यहां से ये, क्योंकि व्यूअर आप हैं, तो ये जो सरफेस जब बनेगा, एंगल बनाएगा, दिस 30 डिग्रीज, यू शुड सी दिस। So that is why we will keep the plane like this, 25 by 55. तो shorter side is in HP, तो ये कंडीशन आ गई, तो ट्रू शेप ये आ गया। So what I can make it, 25 shorter side here and 55 longer side here. (25 by 55). Suppose this is 1, 2, 3 and 4. Nomenclature जैसे ही होए तो नाम तो लिखने जरूरी है, तो nomenclature के हिसाब से ये shorter side हो गई, ये longer side हो गई, 25 and 55. You can use the arrowheads, 1:3, dimensioning, thin lines. Now जब ये HP पे रखा हुआ है तो इसका एलिवेशन कहाँ आएगा? इसका एलिवेशन आ जाएगा XY लाइन के ऊपर ही। So this will be on XY line. So यहां से लेकर यहां तक का आपका जो प्लेन है वो आ जाएगा। Now what will be the elevation? A1 dash, 2 dash is this point and 3 dash, 4 dash is this point. Now it is saying that the surface is making 30 degrees to HP. तो ये जो आपका सरफेस है, आपका प्लेन है, वो 30 डिग्रीज बना रहा है। तो ये लाइन यहां से 30 डिग्रीज एंगल बनाएगी। मेक अ लाइन एट 30 डिग्रीज, एक लाइन खींचिए 30 डिग्रीज पे, उसके बाद ये डिस्टेंस लेके यहां पर कट कर लीजिए। So this point is your 1 dash, 2 dash. This point is 3 dash, 4 dash. इसके जब प्रोजेक्शन हम लेंगे
तो इसके प्रोजेक्शंस यहां से आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आ गया 1, यहां से 1, 1 and 1, दिस इज 1, 2 and 2, this is point 3 and point 3, 4 and 4. So सेकेंड स्टेप में जो आपका रेक्टेंगल था उसका जो लॉन्गर साइड है वो छोटा हो गया और जब एंगल बना 30 डिग्रीज। दिस इज द लॉन्गर साइड विच इज मेकिंग 30 degrees. Now it says that plane is making the side which is on HP is making 45 degrees with VP also. 45 degrees with VP also. Right now this is in HP. अब इसको अगर मैं 45 डिग्री टिल्ट कर दूं यहां पर तो आपको ये एलिवेशन दिख जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूं, जो यहां पर कंडीशन थी इस टाइम पे, मतलब ये फिगर, इसको मैंने 45 डिग्री टिल्ट किया। किस लाइन को? 1 and 2 को, विच इज ऑन HP। HP पे क्या है? 1 dash 2 dash, इट इज ऑन XY लाइन। 1 dash 2 dash इज द एज विच इज ऑन XY, विच इज ऑन HP। तो इसको मैंने 45 डिग्री के ऊपर, यहां पे 45 डिग्रीज का लाइन ले लीजिए। इट इज नॉट सेइंग दैट हाउ मच इन फ्रंट और हाउ मच बिहाइंड, सो दिस इज योर चॉइस। आप ये इस लाइन के ऊपर यहां पर लेकर इतना डिस्टेंस कट कर लीजिए इक्वल टू 1 2, जो कि फिगर नंबर 2 से आया है, एंड देन परपेंडिकुलर लाइंस एंड कंप्लीट द फिगर। This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. अगर ये रेक्टेंगल है तो आपका यहां पर भी रेक्टेंगल रहेगा। अगर ये रोम्बस है तो आपका यहां पर चेंज होने के बाद, ये स्क्वायर है तो यहां पर आपका ये चेंज होने के बाद एक स्क्वायर 45 डिग्रीज टिल्टेड दिखाई देगा। ओके, नाउ यू प्रोजेक्ट ऑल द पॉइंट्स 1 2 3 4 and from the elevation take the points, point 1 from the plan and point 1 from the elevation. तो 1 dash on the XY line वहीं पर आ गया। 2 2, so this will be your 2 dash on the XY line. This point is 3 and 4, this line is projector is 4.3 and 4, तो 3 यहां से आ जाएगा। This is your 3 dash and this is 4 dash. Now I can join 1 to 2, 1 to 3 तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। So what is the final figure? In plan 1 2 3 4 is the final figure. You can give the thickness to the line 0.5 mm group and 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 1 dash is the final figure in the elevation. Now if you see the situation, it is like this. सबसे पहले ऐसे रखा था, उसके बाद इसने 45 डिग्री बनाया, तो आपको जो सामने से दिखाई दे रहा है वो ये भी छोटा हो गया और ये भी छोटा हो गया। This is the figure like this. Correct? Okay, now there is a question number 41. This is, let me write down the number, this is 42. So we have done all the questions of question bank except question number 41. And अगर इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप जो है कोई भी मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट सबमिट योर शीट्स ऑन जीमेल, काइंडली यूज द क्लासरूम ओनली। लेट सबमिशन मना नहीं किया गया है, अभी भी जो लिंक है इट्स अप, बट दैट इज अ लेट सबमिशन। करेक्ट? सो जिसका भी जैसे जैसे होता जाएगा करता जाएगा, एंड एज पर द सबमिशन डेट द मार्क्स विल बी गिवन। द डेट वाज 13th of November, लेकिन
submission is on, you can submit your sheet number 1 to sheet number 5. Okay, all right. Now question number 41. Question number 41 is, a circular plane of 30 mm dia is resting in HP on a point of its rim. The plane makes an angle 30 degrees to HP. Condition 1, the top view diameter makes an angle 45 to VP. Condition 2, the diameter makes an angle 45 to VP. अब यहाँ पर हमको फर्क समझने की जरूरत है कि क्या है. The top view diameter makes an angle means what? Top view means plan means beta. The angle is given beta. अगर हम XY projection of lines को याद करें तो अल्फा एंड बीटा. अगर एलिवेशन है आपका तो आपका एलिवेशन मेकिंग एंगल विद XY इज अल्फा, प्लान मेकिंग एंगल विद XY इज बीटा. तो यहां पर वो कहता है ये प्लान डाया इज मेकिंग एंगल. नाउ व्हाट इज प्लान डाया, व्हाट इज प्लान डाया एंड व्हाट इज एक्चुअल डाया. अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कुलर प्लेन है, ये यहां रखा हुआ, तो इसका जो एक्चुअल डाया वो ये है. दिस इज द एक्चुअल डाया. अब इसके बाद जब कंडीशन दी कि इट इज मेकिंग, सरफेस इज मेकिंग 30 डिग्रीज विद HP, 30 डिग्रीज विद HP, तो यहां पर इसको करने के बाद जो आपको दिखाई देगा ये इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जो आपका यहां पर ये सर्कल नजर आ रहा था, जैसे जैसे एंगल बनाता जाएगा ये आपका इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, है ना. तो यहां पर अब आपका एक पॉइंट XY पे रखा हुआ है, उसके ऊपर नाउ द प्लेन इज मेकिंग एंगल लाइक दिस. तो इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या नजर आएगा, यहां पे एक क्या नजर आएगा, इलिप्स. तो इस टाइम पे जो इसका डायामीटर है, इस टाइम पे जो इसका डायामीटर वो कहलाएगा प्लान डायामीटर. दैट विल बी कॉल्ड एज प्लान डायामीटर. So let's make it. What is the lamina? Circular. कहां रखा हुआ है, HP में. ट्रू शेप कहां आएगा, प्लान. Where is the plan? Below the XY line. So first step, a circle, true shape, in the HP plan. Divide this in equal 8 parts because imaginary lines हमको चाहिए होंगी, जिससे कि हमको जब इसका दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े जब प्रोजेक्शंस के बाद, तो हमको ये पॉइंट्स मिल जाएं. सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्रोजेक्शंस. कहां रखा हुआ, HP पे. तो एलिवेशन कहां आएगा, एलिवेशन विल बी ऑन XY लाइन. एलिवेशन विल बी ऑन XY लाइन. सो दिस इज द एलिवेशन of the circular plane. 1 dash, 2 dash and 8 dash, 3 dash and 7 dash, 4 dash, 6 dash, 5 dash. Now it says that the surface is making 30 degrees with the HP. The प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्रीज विद द HP. अब ये जो लाइन आई है हमारी जो कि ट्रू डाया है, व्हाट इज द डाया, दिस इज द डाया, एंड इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू डाया. ये 30 डिग्रीज. सो अ लाइन एट 30 डिग्रीज and equivalent to the diameter. Use your divider and mark all the points. So 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash, 8 dash. Project all the points for the plan. Plan से अगर हम projections लें 1 and 5, so this is 1 and this is 0.5. This is 5, this is 1. Now this dia is reduced
जो कि हमारा ये था, एक्चुअल था, वो रिड्यूस होके इतना रह गया. सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज प्लान डाया. नाउ रिमेनिंग पॉइंट्स 7, 3. Please remove all the extra lines. 8 and 6, this is point 8 and this is point 6. 2 and 4, point 2 and point 4. Join all the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So your circular lamina is converted in an ellipse, जिसका ये जो डाया है ये कहला रहा है हमारा प्लान डाया. दिस इज योर प्लान डाया. नाउ फर्दर इट सेज दैट द प्लान डाया इज मेकिंग 45 डिग्रीज विद द वीपी. इसका मतलब जो बीटा है वो 45 डिग्री बना रहा है. कंडीशन 1. अब आपने 45 डिग्रीज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी. It is not saying that point 1 is how much in front or behind. So again there is a choice. आप कितना भी distance लेकर आप 1 and 5 कट कर सकते हैं. You can take this much of distance and cut it. This is point 1 and this is point 5. This is point 1 and this is point 5. अब आपको remaining 6 points इसके ऊपर लोकेट करने हैं, फिर रीजॉइन कर देना है. इफ आई सी दिस इज द माइनर डाया, दिस इज द मेजर डाया, तो ये आपके इसमें 90 डिग्रीज पे है. सो व्हाट आई कैन यूज 1 and 5 के मिड पॉइंट निकाल कर, 1 and 5 का मिड पॉइंट निकाल के अगर मैं परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज यूज करूं तो ये जो डिस्टेंस है हमारा 7 आ जाएगा. यहां पॉइंट 7 मार्क कर लूं और ये जो डिस्टेंस है हमारा सेंटर टू ये आ जाएगा 3.3. देन ये जो डिस्टेंस है उसके 8 and 6 के लिए इतना डिस्टेंस 0.8 and 0.6. Then this much distance here 0.2 and 0.4. So you have located all the 4 points. I repeat, 1, 5, midpoint, perpendicular, 0.7, 0.3, 4, 6 and 8, this much distance, a perpendicular line, 6 and 8, distance, perpendicular line, 2 and 4. Join all the points. So you have reconstructed the ellipse at an angle of 45 degrees when your plan dia is inclined at 45 degrees. So what will be the final elevation? Project the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 from the plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 from the elevation. You will get the final. One is on XY line because it is resting on a point of its periphery. तो ये हमेशा XY line के ऊपर ही elevation होगा. Now point 2 and 8 इस लाइन में, तो point 2 यहां से ले लें and point 8 यहां से आ जाएगा. 3 and 7 0.3, very close to 0.2, but it is a different point. 0.7. आप ये गलती ना करें कि मैं पॉइंट्स बाद में लिख दूंगा. जैसे ही लोकेट हो पॉइंट वहां पर उसका नाम लिख दीजिए, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे. Then 0.4 and 6, 0.4 and
6. Again, 7 and 6 will be very close, but will be different. Final point is 0.5. So all are with dashes because this portion is a elevation portion, and elevation means the dash. Start joining the point 1, 2, 3, 4, 5. Now these are the points and you have to make the curve. So use your common sense because यहाँ पर आपका ये जो लेमिना है सर्कुलर है तो हमेशा कर्व ही रहेगा, कोई एज नहीं आएगा. So if there is no error while taking the projections, then there will be a curve. So this is the final elevation, and of that elevation this is the plan. So this is the result of condition 1. This is the result of condition 1. Now the last, that is very important. This is one of the classical questions in the graphic sciences. Now condition 2 says that the true dia is making angle. What is the meaning of true dia? Means the phi is given. Means the phi is given. What is the phi and what is the theta? Theta is the true length making angle with HP. What is phi? The true length making angle with VP. Correct. So अब यहाँ पर condition 2 जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना है हमको. यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर जो अभी लिया था ये plan dia लिया था हमने. This was plan dia. Now take another line at 45 degrees. Take another line at 45 degrees. अब इसमें जो हमारा true dia दिया हुआ है, please focus on the figure 1. ये here. This is the true dia 1,5. इसको लेकर मैं लास्ट फिगर पे जाऊंगा जो कि 45 की लाइन ड्रॉ करी. ये यहां से लूंगा मैं this much distance and I will use this distance here. This is the true diameter. This is the true diameter. और इसके ऊपर अगर ये 0.1 है हमारा और ये 0.50 dash है. Why 50 dash? 150 dash is the true length. This is not the final 5 dash. This is not the final elevation. कहां पर आएगा elevation? अगर मैं इस लाइन पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और इसमें जो मैं elevation length कट करूंगा वो जो आएगा वो हमारा 5 dash आएगा. ओके, तो अभी हमको ये क्या मिला है? ये मिला है हमको true dia. उससे मेरे को क्या मिल गया? 50 dash. 50 dash से क्या मिल गया कि इस लाइन में कहीं पर 5 dash लाई करेगा. 5 dash लाई करेगा. तो 5 dash कहां से आए? equivalent to plan length. Equivalent to plan length. I am sorry, I am using dash here. I am extremely sorry. This is plan. So this is 1 and 5. This is 1 and 5, not dash. Elevation नहीं, यहाँ पे plan आएगा. जहां पर मैंने elevation बोला है, replace that word with the plan. This is 1 and this is 5, the plan of 1. अब मेरे को plan क्या है? 1, 5 ये है. यहां से लेकर ये स्टेप को नोट करिए. यहां से ये plan length लूंगा मैं, 1 पे रख के इसको यहां कट कर दूंगा. 1 पे रख के कट कर दूंगा मैं. Now this is the plan length. This is the plan length of 1, 5. I repeat the steps. 45 डिग्री के ऊपर मैंने एक लाइन लिया, उसके ऊपर ट्रू डाया कट किया. ट्रू डाया के ऊपर 50 आ गया. जहां पे मेरा 5 का प्लान है वो पता लग जाएगा कि इसके लोकस पे कहीं 5 डैश आएगा. 5 डैश निकालने के लिए जो प्लान लेंथ आया है हमारा उसको लेकर जब मैंने कट किया तो यहां पर आ गया हमारा 5 डैश. नाउ दिस इज द 5. दिस इज द 1 एंड दिस इज 5, द प्लान. अब मेरे को इस लेंथ के ऊपर दोबारा से ये कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसका मिड पॉइंट निकालिए. सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो कि हमने यहां पे किया था. मिड पॉइंट 90 डिग्रीज, 0.7, 0.3, then distance 0.8 and
6. Then again distance for 2 and 4. ये distance मैंने यहाँ लिया, this much with the dividers. आपके पास दो divider हैं, small and big, you can use both 2 and 4. Join all the points again. Now you will get another ellipse. This is the ellipse for the condition 2. Here this angle is 45, means this is 5 degrees. Here this is beta degrees. Now again you have to reproject. 1 dash, then 2 and 8, 2 dash, and 8 dash, 3 and 7, 3 dash, and 7 dash, 4 and 6, 4 dash, and 6 dash, and last is 5. This is 5 dash. You can join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 as a curve. So this is the final elevation for condition 2, and this is the final plan for condition 2. This is your question number 41, one of the classical questions in the graphic sciences, where the beta and phi both are making angle with xy and vp. Okay. So now your sheet number 6 is complete. You have to draw all the questions. Kindly do not ask which question is the DHA question. The question which you are not solving on the sheet is the DHA question. आपके सारे questions जब solve हैं उसमें से हम DHA question अपने आप लेकर marks उसमें करेंगे, and बाकी का काम आपका sessional work है. Okay? So this is little bit different from the different other subjects, because इसमें practical and theory दोनों मिला के आपका ये सब्जेक्ट है 3 credits का. तो इसमें आपका जो DHAs हैं करना ही होगा, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है. एंड whenever you will if you get the chance to come to college, then you can ask your queries, and otherwise you can mail all the queries. My suggestion to all the students is kindly make the model, all the planes. बहुत आसान है, कोई भी शेप बना लीजिए और उसको प्लेस करके देखेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट और ज़्यादा आसान लगने लगेगा. थैंक यू वेरी मच.